डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनवर्स क्लासेस चैनल। अनवर्स क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। उसी का एक पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? माय डियर स्टूडेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स, जिनका नाम है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को जिन्होंने दिया है, उनका नाम है रैगनार फ्रिस्क। उन्होंने कहा है, बताया है, मैक्रो इकोनॉमिक मीन्स लार्ज विच स्टडी इंटायर इकोनॉमी। दिस डेफिनेशन is given in the year 1933. Okay, my dear student, अब हम देखेंगे इसमें डिटेल में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। The word macro derived from the Greek word macros, which means large. Thus, macroeconomics means study of entire or whole economy. Macroeconomy study national income, total output, total investment, total consumption, aggregate demand, aggregate supply, general price level. So we say that macroeconomy study entire or whole economy in detail. तो यहाँ our meaning is completed. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, my dear student, complete होता है। अब हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन तो बहुत सारे लोगों में इसमें दिया है मैक्रो इकोनॉमिक का, लेकिन हम देखेंगे डेफिनेशन जिन्होंने दिया है, इनका सबसे छोटा डेफिनेशन है, उनका नाम है प्रोफेसर कार्ल शेपिरो। मैक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू हिम इज macroeconomics deal with the functioning of the economic as a whole. मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को इन्होंने इस तरह बताया है, पेज नंबर 4 पे जो है आपके टेक्स्ट बुक पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक होल एज अ होल, यानी जो पूरा इंटायर इकोनॉमी को वर्क करती है, काम करती है, पूरे इंटायर इकोनॉमी में जो काम होता है, सच एज टोटल प्रोडक्शन होता है, नेशनल इनकम है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताते हैं। इसीलिए ये डेफिनेशन का मतलब है कि एक इकोनॉमी जो फंक्शन करती है, उसके सारे फंक्शन को कंसिडर किया जाता है और उसको लिया जाता है। सो वी कम्स टू नो विद दैट डेफिनेशन इज दैट it deal with the functioning of the economy as a whole. आइए my dear student, आगे चलते हैं इसके फीचर की तरफ। What are the feature of macro economy? My dear student, first feature is aggregate study or study of aggregates. It means macro economy study entire economy. Macro economic not consider a single part. It consider entire economy into account and study everything in detail. My dear student,
macroeconomic study national income, total output, total investment, aggregate demand, aggregate consumption, etc. So we say macroeconomy study aggregates or entire economy. सेकेंड पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट फीचर का इनकम थ्योरी. वी से मैक्रो इकोनॉमिक एज अ इनकम थ्योरी बिकॉज इट स्टडी national income and related to its various elements. So macroeconomic is known as income theory because it explains in detail national income and related to national income various concepts. So we say macroeconomy is income theory. My dear student, come to the third point, general equilibrium. It means macroeconomics not consider partial or take a equilibrium point of an individual. It takes general equilibrium or entire economy, such as it deals with the behavior of demand, supply and prices in the whole economy. Fourth point is that interdependence. Macro analysis take into account interdependence between aggregate economic variables such as national income, total output, total investment, etc. My dear, इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये टोटल सब पूरे मुल्क की, पूरी कंट्री की, पूरे देश की इनकम को लेता है, पूरे देश में जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसको लेता है, पूरे देश में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इसको लेता है. इसलिए हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस मीन्स जो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है वो इट डिपेंड ऑन ईच अदर और वेरियस एलिमेंट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट. सो द फीचर of macroeconomics is that it interdependent. Now come to the point, fifth point, lumping method. Macroeconomic uses lumping method. It means it considers entire economy or takes whole economy. It study the entire economy. It not consider an individual unit or a particular part. So we say lumping method is the study of whole economy rather than a part. It means macroeconomy study entire economy rather than a part. Example my dear student, जैसा एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलेंगे. तो ये सारे ट्रीज की क्या करता है, स्टडी करता है, बट नॉट एन इंडिविजुअल ट्री. सो वी से मैक्रो इकोनॉमी यूजेस लंपिंग मेथड. नाउ कम टू द पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज दैट ग्रोथ मॉडल. Macroeconomic study various factors which contribute to the growth and development of the economy. With the help of macroeconomic model, economy develop and get the path how to develop. Thus, we say macroeconomic is a growth model. It shows concept of growth, how country can develop, for example, how to increase the national income, how to measure the performance of the whole economy, etc. 7th point is that, my dear student, general price level. My dear student, it never tells the partial or we say price of a product.
demand of a goods, etc. It consider or not take a price of a product, but it consider the general price whatever is in the economy. General price level means it shows and studies macroeconomic. General price level is the average of all prices level in the country. Average prices of all goods and services in the country. Thus, my dear student, we say that macroeconomics shows average prices of all goods and services produced in a country. Last point is that policy oriented. On the basis of macroeconomy, governments frames various policies such as how to control inflation, how to remove poverty from the country, how to develop the economy, how to raise the national income, etc. are solved with the help of macroeconomy. My dear student, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा. Once again, I am going to explain in simple form. The following are the features of macroeconomy. First feature is the study of aggregate. It means it study entire economy, not a single. Second, income theory, because macroeconomy consider national income. It measures the national income of the country and related to its various concepts. So we say it is income theory. General equilibrium, it shows the prices of all goods and services of the country, not an individual goods price. It considered average prices of all goods and services. That's why we say it considered general price level. Interdependence, macroeconomics consider all aspects, so it also consider macro and its variable also. That's why macroeconomics is depend on microeconomic concept also and explain the various things. Lumping method, fifth point. Lumping method means study of entire economy, consider all the variables, consider aggregate values. That's why we say it is uses or macroeconomics uses lumping method in the study. 6. Growth model means it gives how to grow. Growth model means it provides concept of growth such as what factors are needed for the growth and development of the economy. 7 point general price level, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ. Last one is the policy oriented. Government form policy on the basis of macroeconomy. Macroeconomy suggests the how economy can grow and promote the economy. Thus, on the basis of macroeconomy, various policies are formed. Thank you, my dear student. मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन मैं आपसे वापस एक चीज कहना चाहता हूँ. एग्जाम में 8 नंबर का आएगा ये. For the sake of examination point of view, you have to read 8 points and write according to marks in the examination. Not make it too big and too small. Write according to marks. Otherwise you are not attempt other question also. That's why give the time to this question is according to marks. मैंने आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए किया कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए. उसका मकसद ये नहीं है कि आप पूरा वैसे ही लिख दो जाके. आप अपने हिसाब से उसको शॉर्ट कर दो, अकॉर्डिंग टू मार्क्स पॉइंट लिख दो. डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स. और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, छोड़ना नहीं. ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट. अब हम चल रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स पे. नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसका स्कोप बताऊंगा और इम्पोर्टेंस बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट. तो मेरे साथ आप बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा. और मैं जाने से पहले आपसे ये कहता हूँ कि इस पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर जब लेंगे तो आपको मेरी और बातें समझ में आ जाएगी और बहुत आसान है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय
चैनल अनवर क्लासेस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं आई होगी या समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे, और उम्मीद करता हूँ कि फिर हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू। और